Hello everyone, my name is Shubham Dubey and I welcome you all on Creative Edge YouTube channel. Today we are going to discuss next questions of UC 2018 which we started previously. You must have seen on our previous video we had discussed some questions of UC 2018. We had covered 1 to question number 10. Today we are going to discuss question number 11, and as you can see the question number 11 is on your screen. So, without wasting time, just share this video with your friends so that they can also be benefited with this video if they are preparing for any design entrance exam, any architecture exam. This is not only important for UC point of view, but any aspirant who is preparing for NATA as well, they can watch this video, they can share with those people who are preparing for NATA and B architecture. So and also, I would like to request to all the people to subscribe to this channel and go to the description box to download the study material for your design entrance exam. So let us start with this session today. I can see a lot of you must be waiting for my video here, right? So I'm entertaining your doubts and your queries on the chat as well. So if you have any query, you can drop me your comment, your message in the chat box, right? So the very first question for the day is that shown below is a combination of fixed pulleys. If the triangular load moves downward, that means हमें ये यहाँ पर triangular load दिया हुआ है बच्चों, कौन सी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है. If this is moved downward, so the question is asking moves down, how many pulleys will rotate in the same direction as the smallest pulley? So first of all, we need to find out which one is the smallest pulley. The overlapping path do not interfere with each other. Now, one more thing I need to consider is that the smallest pulley is also need to be included in this pulley chain. Now, what needs to be done? How we can do this question? At first, this question seems very difficult to all the participants, but एक लॉजिक अगर आप यहाँ पर समझ जाएंगे, so you will be able to do this question. आपको यहाँ पर क्या करना होगा बच्चों की एक मैकेनिज्म समझने की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल आई कैन सी टू काइंड्स ऑफ पुली इन दिस figure, and the very first kind is this one. I would like to highlight it. So the very first pulley is of this way. As you can see कि आपकी जो पहली पुली को जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है, एक एस के जैसा शेप आपको दिखाई दे रहा है. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ पुली इज दिस वन. Only these two set of pulley is possible if you make a pulley chain. So यहाँ पर आपको दो टाइप की पुली दिखाई दे रही है. Now what you need to understand here is that, my dear people, suppose if I pull this triangular object downwards, तो आपको ये समझना होगा कि ये वाला जो पुली है it will rotate in this way, that is in this way it is going to move. ठीक है. From my perspective, it is anti-clockwise. Since you are seeing me in camera, so आप इसे clockwise बोल सकते हैं, but for my point of view, it is anti-clockwise, and you have to consider from your point of view only. So when I say in this way, that means take your finger and rotate the way I am moving. तो आपको आप मुझे देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि मैं clockwise घुमा रहा हूँ, but actually में मैं anti-clockwise घुमा रहा हूँ. राइट, तो दिस नीड टू अंडरस्टैंड, सो दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग इट. तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग पुल होगी, ये स्ट्रिंग पुल होगी, और ये वाली जो पुली है ये कुछ इस तरह से रोटेट होगी. दैट मीन्स अब ये जो है क्लॉकवाइज मूव करेगी. So if the first pulley is moving anti-clockwise, the second is going to move clockwise. I hope everyone is able to understand this idea. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि whenever you are going to have this एस लाइक स्ट्रक्चर, अगर एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रही तो एक क्लॉकवाइज घूमेगी, और अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी. राइट, आई होप दिस आइडिया मस्ट बी क्लियर टू ऑल द पीपल अंटिल हियर. ठीक है. अब दूसरी पुली की बात करें. अब अगर मान लीजिए कि मैं इसको पुल करता हूं इस तरफ से, अगर ये यहां से इस तरफ से पुल होती है, आई एम नॉट कंफर्मिंग दैट कि ये यहीं से इसी तरह से पुल होगी, बट लेट अस अज्यूम कि ये इस तरह से पुल होती है, यानी कि ये जो है इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी. दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज. फॉर व्हाइल आई एम कंसिडरिंग दैट कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी. आई एम नॉट एंश्योरिंग यू कि ऐसा ही होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, बट आई एम जस्ट assuming that for the sake of explanation. So now the question arises कि how this
पुली इज गोइंग टू बी रोटेट, तो ऑब्वियसली बात है कि स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में आपका मूव हो रही है, ठीक है। सो दैट इज वाई ये भी उस सेम डायरेक्शन में ही मूव करेगी। दैट मीन्स यू कैन सी दैट बोथ द पुलीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर ये क्लॉकवाइज मूव करी तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू मूव क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू मूव एंटी क्लॉकवाइज। आई होप दिस आइडिया मस्ट बी क्लियर टू यू। तो हमें सिर्फ यही देखना है कि वट जो भी पुलिस अटैच्ड है, क्या दो पुली के बीच में जो रिलेशन है, वेदर इट इज अटैच्ड इन एस वे और इन दिस वे, लेट अस कॉल इट बी वे। मैं इसको नाम देता हूं, दिस इज एस वे पुली एंड दिस इज बी वे पुली, ठीक है। तो यानी कि यहां पर आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, यहां पर आपका डायरेक्शन चेंज होगा। सो व्हाट, हाउ वी कैन सॉल्व नाउ? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि, और कि सबसे पहले ये हमें ये देखना होगा कि स्मॉलेस्ट पुली बच्चों कौन सा है। सो स्मॉलेस्ट पुली, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें, सो दिस इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट पुली। नाउ लेट अस सी इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। हमने सारे बेसिक्स को समझ लिया है। So let us start doing this question, my dear people. So let me change the color of my marker. So start करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको इस डायरेक्शन में पुल करूंगा। Now I have the privilege to write down on the screen. Obviously, you won't have to. So what? How you are going to solve this in examination? Use your finger, put your finger on the computer screen and use your pen to write on the blank paper provided you while solving the examination, right? तो वहां पर फॉर एग्जाम्पल इफ आई बिगिन विद दिस पुली, पुली नंबर वन लेट अस कॉल इट, तो यहां से स्टार्ट करूंगा तो मैं देख रहा हूँ कि दिस इज गोइंग टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन। दैट मीन्स मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इट इज गोइंग टू मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैंने यहाँ पर ए लिखा है, यू विल बी राइटिंग ए इन योर रफ पेपर विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। यूज योर फिंगर, राइट, अनदर फिंगर ऑफ अनदर हैंड। सो यानी कि यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज में, अब यू कैन सी दैट दिस इज कनेक्टेड इन एस वे, ये यहाँ से कुछ इस तरह से कनेक्टेड है बच्चों। सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू मूव क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है तो दिस, अब ये दोनों आपस में दे आर ऑल्सो मूव कनेक्टेड इन बी वे, दैट मीन्स द डायरेक्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, देन दिस इज गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज, then clockwise, then anti-clockwise, then we have to see that this is clockwise, then I can see, let me cross it, this is clockwise, this is anti-clockwise, then I will go to clockwise, clockwise, anti-clockwise, then again clockwise, then I am going to have anti-clockwise, this is also going to be anti-clockwise, then again clockwise, anti-clockwise, then I'm going to move to this pulley, that is again it is going to be anti-clockwise, clockwise, this is also going to be clockwise, this is also going to be clockwise, this is going to be anti-clockwise, this is going to be anti-clockwise, and this is also going to be anti-clockwise, and this is how your pull string has been finished, my dear people. So you can see that कि यहाँ पर कितने clockwise है कितने anti-clockwise है. Now we have to find out कि smallest pulley किस direction move करी. तो as you can see, my dear people, this was the smallest pulley and it was moving in clockwise manner. So let us count how many clockwise do we have actually. तो clockwise हम देख लेते हैं कितने हैं. So let us begin counting. ठीक है. तो clockwise आपके पास कितने हैं? We have 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, 6, 7, 8, no, not 8, 7, 8, 9, 10, and 11. So you can see that you have 11 pulleys which are moving in the clockwise manner. Hence, the answer to this question is going to be 11. I hope ये आप सभी लोगों को क्लियर होगा. I am seeing that if you have any doubt, you can ask me in the chat box, my dear people. तो यानी कि यहाँ पर ये आपकी 11 पुलिस रहेंगे जो क्लॉकवाइज मैनर में मूव करे होंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट पुलिस मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो आई होप दिस आइडिया मस्ट बी क्लियर टू यू. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डियर पीपल. Now, the second question reads that for the day that
what is going to be the angle between? So let me read this question. The current time is 10 minutes past 3. That means the time is 3:10. 3:10 यहाँ पर टाइम हो रहा है. What will be the angle be between the hour hand and the minute hand of the clock 4 hour 40 minutes from now? यानी कि 4 घंटे 40 मिनट के बाद what is going to be the angle between hour hand and the minute hand. So first of all, let me see what exactly the time is as of now. So the time is 40 plus 10 is going to be 50. 3 plus 4 is going to be 7. That means the time is 7:50. That means just 10 minutes before 8 o'clock. So we have to find out what is going to be the angle between at 7:50. So if you wish to find out the angle between the minute hand and the hour hand, the very direct formula that you should be using is theta is equal to modulus of 11 by 2m minus 30h. This is the direct formula that you can use in order to find out the angle between minute hand and hour hand. This formula should always be used. आपका काफी जल्दी यहाँ से इसका आंसर आ जाता है बच्चों. ठीक है. Now, what needs to be done here? So we will be substituting the value of m and h. What is m and h represents? M is basically minutes and h represents hour. तो मिनट यहाँ पर आपको बच्चों कितना है? मिनट आपको दिया हुआ है 50 और आर आपका है 7. So I'm going to put that is modulus of 11 by 2 times of m. m यानी कि यहाँ पर है 50 minus h is going to be 30 into h is 7. तो यानी कि ये यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, दिस इज कैंसल 25 टाइम 25 इंटू 11 इज गोइंग टू बी 275 माइनस 2 minus it is going to be 210. So that is I am going to get 65. तो 65 डिग्री का एंगल. What does modulus implicate by the way here? So यहाँ पर modulus represents करता है कि यहाँ आपका जो एंगल है वो पॉजिटिव रहेगा. ठीक है. So 65 degree is the angle when the time is 7:50. आई होप एवरीवन इज रियलाइजिंग दिस पॉइंट. ठीक है. तो यानी कि यहाँ पर आपका जो एंगल है वो 65 डिग्री का है. तो इसका आंसर आपको 65 फिल करना होगा बच्चों. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल अगेन. ठीक है. सो थैंक यू सेवन कलर्स फॉर गिविंग अस द हार्ट. ठीक है. आई होप यू मस्ट बी एंजॉइंग दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एज वेल. द वर्ड एप इज एन एनाग्राम ऑफ पी. नाउ एनाग्राम का क्या मतलब होता है कि आपके पास कोई वर्ड है, उसको अगर उसके स्पेल को अगर आप रीअरेंज कर देते हो तो यू गेट अ न्यू वर्ड. ठीक है. सो दैट मीन्स एनाग्राम. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर एनाग्राम्स ऑफ एनिमल्स. तो यानी कि आपको यहाँ पर कितने ऐसे वर्ड दिख रहे हैं जो जिनको आप रीअरेंज करेंगे उनके लेटर्स को, सो यू आर गोइंग टू गेट द नेम ऑफ एन एनिमल. तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन माय डियर पीपल. सो वी हैव द वेरी फर्स्ट वर्ड इज ग्लो. ग्लो से आप गेस कर सकते हो कौन सा वर्ड बना सकते हैं. आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेस इन द चैट बॉक्स. वी हैव some people in the chat box, so if you wish to you can write down your answer in this. ठीक है. तो यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो ग्लो से आई डोंट थिंक कि कोई सा वर्ड बनता होगा. ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट फ्लो, सो यू कैन मेक वन वर्ड दैट इज वॉल्फ. देन LOIN, फ्रॉम दिस यू कैन मेक लायन लॉयन. ठीक है. सिट, कैन वी मेक अ वर्ड विद दिस? SITTIS STIIST. कोई सेंसिबल मीनिंग नहीं बन रहा है किसी एनिमल का. देन BALM बाम, सो फ्रॉम दिस यू कैन मेक लैम्ब. ठीक है. बेयर, सो फ्रॉम दिस यू कैन मेक अ बेयर. ठीक है. देन DOG. ठीक है. देन LANE. आर यू एबल टू मेक एनी वर्ड विद दिस ऑनलाइन पीपल? ठीक है. So yes, seven clear. You are writing absolutely correct. Wolf, lion, lamb, bear. Then can we make any word with LANE? I guess no. Then with ACT you can make cat. With BTAB you can make bat. ठीक है. Then RAT से आप TAR से आप rat बना सकते हैं. BIT से आई गेस कोई वर्ड आपका नहीं बनेगा. देन रीफ से कोई वर्ड बन सकता है क्या? आई गेस इससे भी नहीं बन सकता है. सो यू हैव अ टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 words of 8 names of animals you can make from given words. So the correct answer हमें क्या पूछा है? How many
of the following words are anagrams of animals. So eight is the answer. Eight is, words are there which are animal anagrams of some animal. I hope this is something clear to you. So nail, Nail, it was LANE, seven colors. It was not. तो यानी कि यहाँ पर आप इससे NAIL नहीं बना सकते, आपके पास आई नहीं है ना, ई है. दैट इज वाई दिस इज नॉट गोइंग टू बी मेकिंग वे नेम ऑफ एनी एनिमल. इनफैक्ट, ठीक है. सो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू. चलिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग वन. आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको करने में बहुत इजी है ये. दिखने में डिफिकल्ट लग सकता है कि क्या ही दे दिया, पजल टाइप दिख रहा होगा, बट you can answer this question within seconds. The only thing that you need to do is to understand the question properly. First of all, let us understand what has been written in this question. So as you can see, it reads that privacy of a space depends on the level of closure it has from its surrounding. ठीक है, तो यहाँ पर प्राइवेसी की पहले आपको डेफिनेशन दी गई है कि प्राइवेसी किसको बोल रहा है. दैट इज द लेवल ऑफ क्लोजर यू हैव फ्रॉम द सराउंडिंग. ठीक है. दैट इज द डिफिकल्ट ऑफ एक्सेसिंग द स्पेस. ठीक है, from the outside house. The figure below shows the plans of four houses at a village street junction. What is the most private room amongst all the rooms across all the houses? तो आपको यहाँ पर ये आंसर करना है कि सबसे प्राइवेट रूम बच्चों यहाँ पर कौन सा है. आपको चार हाउसेस के प्लान दिए हैं. पहला, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन. तो यू हैव टू आंसर कि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राइवेट सी किस रूम में है, क्लोजर सबसे ज्यादा किसका है, कौन सा रूम ऐसा विच इज मोस्ट डिफिकल्ट टू एक्सेस टू. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज. लेट मी चेक इन द चैट बॉक्स एज वेल इफ देयर एनीवन. सर निफ्ट 2023 कब हो रहा यूजी? कोमल, एज ऑफ नाउ निफ्ट को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है. आई हैव रेड योर चैट चैट कोमल, सो डोंट वरी, आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है. मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि एज ऑफ नाउ कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है. जनरली आपका जो निफ्ट है वो फरवरी मार्च के आसपास हो रहा होता है. ठीक है. आप देख रहे हैं कि यूसीड हैज अनाउंस्ड इट्स डेट्स, देन एनआईडी ने अपनी डेट्स अनाउंस कर दी है. निफ्ट भी जो है जल्द ही आने की संभावना है. जस्ट वेट एंड वॉच. यू कैन गो थ्रू अवर चैनल कि हम, क्योंकि यहाँ पर ना सारी चीजें बता रहे होते हैं कि व्हेन निफ्ट आपकी जो भी एग्जाम है, एनआईडी, एनआईएफटी, यूसीड, सबके लिए आपको इन्फॉर्मेशन आप पर दी जा रही होगी. सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल. और जब भी आपका निफ्ट का भी फॉर्म आएगा ना, निफ्ट की जो भी डेट्स आएगी, सो वी विल डेफिनेटली कमिंग लाइव विद द सेशन. ठीक है. सो एज ऑफ नाउ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट नाउ. तो यानी कि यहाँ पर सेवन कलर्स यू आर सेइंग वन रूम, फर्स्ट रूम. तो फर्स्ट रूम अगर आप देखोगे सेवन कलर्स, तो सबसे ये तो यहीं से आप घुस सकते हो. यू कैन सी दैट दिस इज सिर्फ एक ही दरवाजे को क्रॉस करना जा रहा है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो. दिस इज नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट रूम टू एक्सेस. ठीक है. किसको मैं डिफिकल्ट रूम बोलूंगा एक्सेस करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रूम नंबर 5 में जाना चाहते हो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट सेइंग कि दिस इज द करेक्ट आंसर, बट अगर आप रूम नंबर 5 में जाना चाहते हो तो इनफैक्ट यहाँ भी एक ही रूम गेट्स आपको जाना पड़ रहा है. फॉर एंटरिंग द रूम नंबर 4 आपको यहाँ पर गेट नंबर 1 एंड गेट नंबर 2 से आपको जाना पड़ रहा है. दैट मीन्स रूम नंबर 4 इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सेस एज कंपेयर टू रूम नंबर 5. आई होप यू मस्ट बी गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है. यू आर नॉट कंफर्म, सो डोंट वरी, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट विद दिस. तो यानी कि यहाँ पर आप देखिए कि कौन सा रूम सबसे डिफिकल्ट है एक्सेस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, हम ढूंढते हैं कि क्या 1 है, 2 है, 4 है. मैंने आपको डेफिनेशन, आई होप सबको क्लियर होगा कि विच आई एम कॉलिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू एक्सेस. ठीक है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो रूम नंबर 25 है बच्चों, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू एक्सेस. नाउ यू विल हैव टू चेक ईच एंड एवरी रूम कि कौन सा आपका डिफिकल्ट है. बहुत आसान है देखना. ठीक है. जैसे आप रूम नंबर 1 में देखते हैं कि यू ओनली रिक्वायर 1 गेट. 2 में आपके पास यू हैव 1 गेट एंड 2 गेट. अगर आपको 4 में पहुंचना है तो यू रिक्वायर 1 गेट एंड 2 गेट. ठीक है. 5 में पहुंचने के लिए एक ही रूम चाहिए. 3 में पहुंचने के लिए एक ही रूम चाहिए. 7 में पहुंचने के लिए दो गेट चाहिए. 6 में पहुंचने के लिए आपको 2 गेट चाहिए. बट 25 में अगर आप पहुंचना चाहते हो, ठीक है, तो इसी तरह से 25 में आप जाएंगे, दिस इज गेट नंबर 1, दिस इज गेट नंबर 2, दिस इज गेट नंबर 3 एंड दिस इज गोइंग टू द गेट नंबर 4. दैट मीन्स द रूम नंबर 25 इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू एक्सेस टू. ठीक है. इफ यू थिंक इन 26, तो 26 आपको यहीं से ही आप घुस सकते हो. यू नीड ओनली 1 गेट इन ऑर्डर टू एंटर.
8 आप, कुछ बच्चे कह रहे हैं डीन इज सेइंग 8, सो रूम नंबर 8 बच्चों आप यहीं से एंटर कर सकते हो ना, यू कैन सी दिस इज द स्पेस वेयर यू कैन एंटर बाय. सो दिस इज अगेन इट इज नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट रूम टू एक्सेस टू. ठीक है, सो आई होप दिस आइडिया मस्ट बी क्लियर टू यू एवरीवन. सभी को क्लियर होगा. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड डू लेट मी नो, आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेस इन द चैट बॉक्स एज वेल. ठीक है, तो ये ना कि यहाँ पर आपके पास गेट नंबर जो 8 है ना, वो डिफिकल्ट नहीं है. 25 नंबर का जो गेट है, रूम है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू एक्सेस. नाउ लेट अस मूव अहेड. चलिए अगेन, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस. द फैक्ट अबाउट दिस क्वेश्चन इज दैट कि ये आपको पढ़ने में बहुत लेंदी लगेगा. मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द इंफॉर्मेशन, देन आई विल बी शोइंग यू द कंप्लीट मैप ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर समराइज करूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन इन दिस क्वेश्चन. तो until then आई एम seeing your chat replies if you have any queries. ठीक है, चलिए. तो आप आई होप ये क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे. आई एम ऑल्सो रीडिंग पैरेलली विथ यू द क्वेश्चन. द फिगर बिलो शोज द layout plan of the conservative Themalwadi village, which consists of a cluster of houses. Then what it reads: black lines represent the wall and the openings in those walls represent either windows or doors. Also marked are the houses of Ria, who lives with her family, and Barkia, who are in love and having an affair. So it is a good question. So, hidden from the eyes of the villagers, they regularly meet at night in Barkia's house. Thammalwadi is so conservative that even the sight of women on the street at night raises eyebrows. So that means this is a story of a village where many of the people are conservative, and if they see any women outside, whether it is day or night, so that is a matter of concern for them. Okay, so if Ria takes the path that has the least number of openings, what is the number of openings that she will have to pass to get to Barkia's house? Now, basically, these two people are having an affair, and if they wish to meet, so which is the path they should go by so that they will not be seen by the many number of people. So this is the map that you can see. I hope everyone is able to see on the screen as well. So you have to see कि सबसे कन्वीनियंट पाथ कौन सा होगा जहां पर कम से कम डोर्स या कम से कम विंडोज आपके होंगे, सो दैट रिया विल बी एबल टू मीट बारक्या. ठीक है, सो कहाँ से जा सकते हैं. नाउ व्हाट आर दीज अल्फाबेट रिप्रेजेंटिंग, माय डियर पीपल. ये अल्फाबेट आपको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लेट अस से ये आपको पाथ बताना है. लेट अस से कि रिया किस पाथ के थ्रू ट्रैवर्स करेगी ऑन दिस मैप. फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए अगर रिया अपने घर से निकलते, नाउ दिस इज शी कैन कम आउट फ्रॉम दिस और शी कैन कम आउट फ्रॉम दिस. तो यानी कि यहाँ से वो रिया जा सकती है, ए से होते हुए वी पर गई, वी से यू पर गई. इन दिस वे यू विल हैव टू write the answer. So can you tell me which is the path she should traverse by in order to reach Barkia's house so that least number of women or least number of people will see Ria? Can I expect your answer in the chat box, all the people who are watching us? ठीक है, तो I am giving you some time, and at the same time I'm entertaining your chats as well. If you have any doubt you can ask me. ठीक है, till the time, I would like to request all the people as well, if you have not subscribed to this channel until, so you can subscribe to this channel. You should be subscribing to this channel so that आपको जो है ना डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपकी जो चीजें हैं काम की, वो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा. और स्टडी मटेरियल में भी आपको बहुत सारी काम की चीजें मिल सकती है आपकी. ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू एनरूट द पाथ दैट वी कैन गो बाय. तो यानी कि यहाँ पर लेटर से रिया यहाँ से स्टार्ट कर रही है. ठीक है, दिस इज द ट्रायल एंड एरर मेथड. आई होप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि क्या करने की जरूरत है. तो रिया अगर मान लीजिए यहाँ से जा रही है, ठीक है, तो ए से वो निकलती है, ए वाला पाथ निकलती है. नाउ आई कैन शी कैन ट्रेवर्स इन दिस रूट और शी कैन ट्रेवर्स इन दिस रूट, बट इफ शी गोस इन दिस ऑन दिस रूट, तो यानी कि आपको यहाँ पर एक विंडो मिल जाएगी.
हमें कम से कम विंडो चाहिए या कम से कम डोर्स चाहिए जहां जहां से रिया को पास करवाया जा सके। सो रिया विल गो फ्रॉम ए टू डब्ल्यू। ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग कि दिस इज अनअवॉइडेबल। ठीक है, तो डब्ल्यू से यहाँ पर होते हुए जाएंगे, देन डब्ल्यू से शी कैन गो टू टी, देन टी से वो जा सकती है जी पर। यहाँ पर अनअवॉइडेबल एक विंडो या डोर है। देन जी से वो जा सकती है क्यू पर, देन क्यू से शी कैन गो टू आर, अनदर विंडो और डोर, और आर से वो जाएगी जेड पर। ठीक है, सो दिस इज द पाथ दैट शी कैन गो पास थ्रू। और आप देख सकते हैं कि शी हैज पास्ड थ्रू ओनली थ्री डोर्स। दिस इज डोर नंबर वन, दिस इज डोर नंबर टू, एंड दिस इज डोर नंबर थ्री। यानी कि मिनिमम यही इतने ही डोर आपको मिलेंगे। यू कैन ट्रैवल्स टू सम अदर पाथ एज वेल, बट देर ऑल्सो यू विल नॉट बी गेटिंग एनी पाथ विच हैज लेस देन थ्री डोर्स और विंडोज। ठीक है, तो आई होप ये सभी लोगों को क्लियर होगा। तो आप जब आंसर एंटर करोगे तो आप यहाँ पर थ्री लिख रहे होगे कि थ्री इज द मिनिमम नंबर ऑफ डोर्स और विंडोज शी इज गोइंग टू पास बाय। सो आई होप दिस आइडिया मस्ट बी क्लियर टू ऑल द पीपल हु आर विथ अस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यू कैन हैव सम अदर पाथ एज वेल, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट you have to report how many doors, minimum how many doors are required. चलिए, now in this question you have been given a figure of a pyramid and here you have to count the number of triangles. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली जो यूसी कि जब हमने क्लास ली थी इसका, जब पार्ट वन वीडियो रिलीज हुआ था, दिस इज द पार्ट टू ऑफ दिस, तो वहां पर भी हमने वी हैड काउंटेड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, द नंबर ऑफ स्टैक्स, द नंबर ऑफ लाइंस। आप सबको याद हो तो यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। बहुत इजी रहेगा, आप लोगों ने अगर वो पिछला वीडियो देखा होगा आपको समझ आया होगा कि हाउ डू वी काउंट द नंबर ऑफ फिगर्स। ठीक है, सो दिस इज द वन ऑफ द डायग्राम्स ऑफ pyramid. So what it reads, shown is a figure of is a pyramid with a square base, then formed by vertices E, F, G, H. So you can form all the vertices here. And the top vertex I, the diagonally opposite vertices EG and FH are connected to form the vertex J. तो यानी कि यहाँ पर J पर intersect कौन हो रहा है, FH and EG at their intersection. The vertices I and J are also connected as shown. How many triangles are formed by all these vertices? So online people, we should be counting the number of triangles in this. So let us begin to count. So यानी कि सबसे पहले आप देखो ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं। Let us start with the base of the pyramid. तो pyramid के बेस में आपको कौन कौन से ट्राइंगल देखने को मिल रहे होंगे। You must be seeing the very first triangle JEH. This is the first triangle. In this way, you can find out four triangle JHG. This is the second one. Then JGF. Then FJE. These are the four triangles that you can see in this figure. इसके बाद अभी भी बेस में फर्दर यू कैन फाइंड आउट फर्दर ट्राइंगल्स, व्हाट आर दोज ट्राइंगल्स आर गोइंग टू बी। अगले भी आपको कौन कौन से ट्राइंगल मिल सकते हैं। इफ यू लुक एट ट्राइंगल एफ ई जी, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ट्राइंगल। देन एफ जी एच, दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड ट्राइंगल। देन जी EH, this is going to be the third triangle, and FHE is going to be the fourth triangle. यानी कि यहाँ पर with the combination of two triangles, you are forming four such triangles in the base. तो अगले चार triangle को भी मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ. So 4 plus 4, we have 8 triangles as of now in the base itself. Now let us move along the slant height. तो आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल आपको कौन सा दिख रहा होगा. This is IEH. This is going to be the first triangle. So this is the first face of the pyramid. Similarly, you have four faces in the pyramid. So that is why four such triangles. So let me add four more. ठीक है. Then can we still count the number of triangles? So I guess yes. So you can have triangle IFJ. This is going to be the one of the triangles. Then IHJ. This is going to be the second triangle. Then we can have IJG. This is going to be the third triangle. And IJE is going to be the fourth triangle. ठीक है, सो ये आपके चार ट्राइंगल और हो गए. इसके बाद आपको जो कुछ ट्राइंगल्स देखने को मिल रहे होंगे वो होंगे आई ई जी.
that is the bigger triangle, IEG. This is one triangle, and IFH, this is going to be the another triangle. So यानी कि यहाँ पर दो triangle और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है. So a total of 4 plus 4 plus 4 plus 4 is 16 plus 2 is 18 triangles you can see. I hope no one is counting this as the triangle कि सर ये भी एक triangle है. No, you will not be counting that because actually this is a 2D figure और ये लाइन intersect नहीं हो रही है. एक लाइन ऐसी दूसरी लाइन ऐसी है. ठीक है, मतलब गैप है दोनों के बीच में. They are not intersecting because it is a 3D figure, right? So you have a total of 18 triangles in this case. I hope everyone must have understood this question. ठीक है. So base में हाँ बेटा हमारे पास we have 8 triangles, 7 colors, we have 8 triangles in the base. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. Now, this is another a very interesting question of geometry. So you see specifically ask question from geometry when it comes to aptitude. ठीक है, geometric और surface area and volume, इनसे कुछ काफी सारे क्वेश्चन आते हैं. Then probability. These are the topics that you should always prepare if you are preparing for UCEED. Right now, this is the question which reads that the length of and the breadth of the white rectangle are 6 and 4. तो आपको लेंथ और ब्रेड दी है. This is 6 and this is 4. The proportions of the outer black, middle red and inner white rectangles are the same. तो यानी कि ये ना आपका जो white वाला rectangle है उसी proportion में आपका green वाला जो red वाला जो rectangle है वो and this black rectangle, they are in the same proportion. I hope this idea is clear to you. Then what has been told, what is the length of the hypotenuse of triangle ABC? So you have this triangle ABC and you have to find out the length of AB. So AB is something you need to find in this question. Now, how we can proceed with this question? So there could be multiple ways of solving this question. You must, if you Google this, you are going to get some 2 or 3 approaches to solve this question. But if you know one of the theorems related to this, you will be able to solve this question very easily. Okay. So how you can do that? Let me tell you. ठीक है, तो आपको क्या बोला गया बच्चों, सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि if you have a triangle, now what kind of triangle it is, it does not matter. If you have a triangle and if you make a rectangle inside it, if you make a rectangle inside it, so what you should know is that the area of that rectangle which is inside the triangle is always the half of area of triangle. ठीक है, ये चीज आप सबको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक थ्योरम्स दैट यू शुड नो इन दिस क्वेश्चन. क्या बोला है मैंने कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इनसाइड द ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इफ आई टॉक अबाउट द वाइट रेक्टेंगल विच इज इनसाइड द ग्रीन ट्राइंगल, तो यानी कि यहाँ पर एरिया ऑफ वाइट रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 6 into 4, लेंथ इंटू ब्रेड, दैट इज 6 into 4. दिस इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ग्रीन ट्राइंगल. एरिया, आई शुड बी राइटिंग एरिया ऑफ ग्रीन ट्राइंगल. ठीक है, तो यानी कि यहां से मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ जो ग्रीन ट्राइंगल है ना वो है 6 into 4 24, और ये 2 इज ऑल्सो गोइंग टू गो इन द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज गोइंग टू बी 48. The area of green triangle is 48. Now, area of green triangle की बात करो तो it is a triangle, that is why its area must be half of base into height. तो यानी कि यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ half of a base into height को हम एक अच्छा तरीका है रिप्रेजेंट करने का. You can see that this green triangle's base, can I call it 6x? The reason is that कि यहाँ पर आपको बोला गया है क्वेश्चन में the proportion of the outer black, middle red and the inner white rectangles are the same. तो आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं इसको 6 बोल रहा हूं तो ये भी 6 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, दैट इज आई एम कॉलिंग इट 6x, और इसको मैं बोलूंगा 4x. तो आप देख सकते हैं द बेस ऑफ द ग्रीन ट्राइंगल इज गोइंग टू बी 6x एंड इट्स हाइट इज गोइंग टू बी 4x. तो हाफ ऑफ 6x into 4x, दिस इज इक्वल टू 48. ठीक है, तो यानी कि यहां पर आप 6 8s आर 4 2s आर, x into x is x square, and this 2 is going to the right hand side, so it is going to be 2 into 2, that is 2 into 2, that is 4. So from here I can say that x is going to be under the root 4 which is equal to 2. यानी कि यहाँ पर आपका x जो है
वो कितना है 2 है। तो यानी कि आपकी जो 6x की वैल्यू आई है ना बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी, आई एम कॉलिंग इट 6x टू बी इक्वल टू, ठीक है। तो 6x आपका हो जाएगा 6 into 2 विच इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा 6 into 2 विच इज इक्वल टू 12। सो दैट मीन्स यू कैन सी दैट द लेंथ ऑफ दिस ग्रीन ट्राइंगल इज 12, और जो हाइट है ना वो कितनी हो जाएगी, 4 into 2 दैट इज गोइंग टू बी 8। तो यानी कि आपका जो ग्रीन जो ट्राइंगल है, या यू कहिए जो रेड वाला रेक्टेंगल है, उसकी जो डायमेंशन है वो 12/8 हो गई है। आई होप एवरीवन इज रियलाइजिंग दैट द द डायमेंशन ऑफ ट्राइंग रेक्टेंगल जस्ट गॉट डबल्ड। मैं जिस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ बच्चों, वो कौन सा रेक्टेंगल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ। इट्स डायमेंशन जस्ट गॉट डबल्ड। सो सिमिलरली कैन आई से दैट द आउटर रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल, इसकी डायमेंशन भी डबल हो जाएगी। यूजिंग द सेम वे यू कैन डू इट, बट यहाँ पर आपको टाइम भी बचाना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट सिमिलरली दिस डायमेंशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी गेट डबल। सो दैट इज व्हाई आपका ये जो 12 था, तो दिस टाइम दिस इज गोइंग टू बी 24, दिस इज 24, एंड दिस इज गोइंग टू बी 16, डबल ऑफ 8। अब हमें यहाँ पर निकालना है ए बी की लेंथ। तो ए बी की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर पूरा आपका रेक्टेंगल का डायमेंशन 24 है, तो ऑब्वियसली ए सी विच इज इन द मिडिल, वो आपका हो जाएगा 12, दिस इज गोइंग टू बी 12, एंड this is going to be 16. So using the Pythagoras theorem, you can find out the length of AB. So AB is going to be under the root 12 square plus 16 square. I hope this idea is clear to you. So it is going to be 144 प्लस 256 अंडर द रूट में चल रहा है, और ये हो जाएगा अंडर द रूट 400 विच इज इक्वल टू 20। तो यानी कि यहाँ पर आपका जो ए बी लेंथ है दैट इज इक्वल टू 20। आई होप दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर विथ अस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो लेंथ है दैट इज 20। फाइन, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। चलिए, क्या बोला इस क्वेश्चन में। सो मीठापुर वर्क्स ऑन अ बार्टर सिस्टम। Barter system, what do you mean by barter system? Suppose in earlier days you didn't have money. I'm talking about the days when primitive money used to be there, or the era before when the currency were launched. So what we used to do with barter system. What is barter system? Suppose I have rice, so I will exchange my rice with the commodity. For example, I require vegetables. So I will exchange my rice with that people who need rice. तो मैं उसको बदले में राइस दे दूंगा, और उसके बदले में मैं उससे वेजिटेबल ले लूंगा अगर उसके पास है तो. So this was known as barter system. So Mithapur works on a barter system. Each person there loves different sweets. Mukund is willing to exchange two toffees for a lollipop. So there is this guy named Mukund. What exactly he is doing? So Mukund can exchange. ठीक है, मुकुंद क्या कर सकता है, कैन एक्सचेंज टू टॉफीज. So let me write it parallelly. Two toffees. What it can exchange with a lollipop. One lollipop. Then and three ice cream for a trophy. Then three ice cream for a for one toffee. Ranjana is willing to exchange one ice cream for two lollipop. So there is another girl named Ranjana. ठीक है, she's willing to exchange one ice cream for two lollipops. So one ice cream for two lollipop, and three toffees for a lollipop. Three toffees for a lollipop. Mukund and Ranjana don't know each other. So this is one of the important concern that he has put in the question. But both of them know Sita who loves toffees. So there is this another girl Sita who loves toffees. ठीक है? Sita has one lollipop. So as of now, Sita has one lollipop. She can meet Ranjana and Mukund only once. So what does it means that not necessarily in that order. Many of the students are not able to understand this line. Suppose
I am Sita, so I can meet Ranjana. When I meet Ranjana, I will go to Mukund. It does not mean that you have to meet only one of them. No, you are going to meet both the person, but only once. When you meet Ranjana, then you can exchange whatever you wish to exchange with that girl Ranjana, and then you move to Mukund. When you have come to Mukund, now you can't go to Ranjana, right? For exchange. So what is the maximum number of टॉफीज that सीता कैन गेट? सो यहाँ पर आपके पास देखो, अब सीता यहाँ पर आपके पास है एक लॉलीपॉप को लेकर किसी एक के पास जाएगा. आइदर शी कैन गो टू मुकुंद और शी कैन गो टू रंजना. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेयर शी मस्ट गो. तो यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि सीता आप किसी को भी पिक कर सकते हैं. लेटर से मैं मुकुंद को पिक कर रहा हूँ कि वो पहले मुकुंद के पास गई है. ठीक है, तो सीता गोज टू मुकुंद. अब मुकुंद के पास हो जाएगी तो वो क्या एक्सचेंज कर सकती है? नाउ शी हैज वन लॉलीपॉप, तो एक लॉलीपॉप के बदले शी इज गोइंग टू हैव थ्री टॉफीज. सो नाउ सीता इज गोइंग टू हैव थ्री टॉफीज विद द हेल्प ऑफ मुकुंद. अब उसके पास थ्री टॉफीज आ गई है. अब मुकुंद ये भी बोलता है कि विथ वन टॉफी ही इज गोइंग टू एक्सचेंज थ्री आइसक्रीम. सो ऑब्वियसली विथ टू टॉफीज ही इज गोइंग टू एक्सचेंज सिक्स आइसक्रीम. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है, सीता के पास एक लॉलीपॉप थी, तो एक लॉलीपॉप से उसके पास दो टॉफी हो गई, तीन नहीं आएगी बच्चों. इट इज गोइंग टू बी टू टॉफीज. ठीक है, सो टू टॉफीज एज ऑफ नाउ सीता हैज. नाउ विद दीज टू टॉफीज शी exchanges आइसक्रीम. तो नाउ शी knows that Mukund willing to exchange one toffee with three ice cream. So that means she has two toffees. So Sita is going to get six ice cream. ठीक है, with one toffee, three ice cream, two toffees, six ice cream. So Sita now has six ice cream. Now the exchange has been done with Mukund. ठीक है, तो मुकुंद के पास एक बार गई, बट यू कैन एक्सचेंज विथ मुकुंद मल्टीपल टाइम्स. दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर. ठीक है, नाउ श्रीता विल गो टू रंजना. नाउ further, if she goes to Ranjana, she is not going to come again with to Mukund, right? So the exchanges with the trading with Mukund has been done. She is going to now to Ranjana now. तो अब रंजना के पास हो गई है छह आइसक्रीम को लेकर. अब आइसक्रीम के लिए रंजना का क्या रूल है? विथ वन आइसक्रीम शी एक्सचेंजेस टू लॉलीपॉप. सो दैट मीन्स Sita has six ice cream. So Sita with this exchanging with six ice cream, she is going to have 12 lollipops. ठीक है, उसने छह आइसक्रीम दे दी है रंजना को, बदले में 12 लॉलीपॉप ले लिए. अब नाउ सीता हैज 12 लॉलीपॉप बट शी विश टू टेक चॉकलेट्स, राइट? दैट इज टॉफीज. तो अब वो क्या कर सकती है कि शी विथ दीज 12 लॉलीपॉप शी इज गोइंग टू एक्सचेंज टॉफी. तो एक लॉलीपॉप के बदले में रंजना एक्सचेंजेस थ्री टॉफीज. सो यू हैव 12 लॉलीपॉप. सो दैट इज वाई यू आर गोइंग टू गेट 12 into 3 toffees. That is 36 toffee she is going to have in this entire transaction. I hope this idea of trading is understood by everyone. Yes, color, seven colors. Exchange of goods by good, what we mean by barter system. So I hope this idea must be clear to you कि 36 toffees किस तरह से exchange हो रही होगी. ठीक है? Now let us come to the next question. Now this question is very interesting one. Why it is interesting? Because UCEED has marked two answers for this question, right? So first of all, read the question first and let me know your answer in the chat box. देखते हैं कि क्या आप लोग भी वही सोच रहे हैं क्या कि जो यूसीड ने जिसको आंसर टिक किया. यूसीड हैज कंफर्म्ड इट्स टू आंसर्स, राइट? सो व्हाट द क्वेश्चन मी रीड्स, अतुल हैज नाइन कैट्स दैट always fight with each other. He puts all of them into a square box. What is the least number of square partitions he must use to keep all the cats separated from each other? ठीक है, तो this is the question that you have to answer. So I'm waiting for your responses. We are good in numbers when it comes to live audience. So जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं ना, यू कैन आंसर योर नंबर ऑफ स्क्वायर्स कि कितने स्क्वायर आपको रिक्वायर होंगे इन ऑर्डर टू कीप दीज कैट्स सेपरेटेड. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज. ठीक है, आइडिया आई होप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा. ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर ड्रॉ करने हैं या यू का ये इमेजिन करना है कि कितने स्क्वायर में फिट कर दूं इस बड़े से स्क्वायर बॉक्स के अंदर, सो दैट माई
all the cats are away with each other. Now, what is the idea that everyone may think as of now? कि एक काम करते हैं, let us begin to start in this way कि यहाँ पर एक स्क्वायर में इसको रख देते हैं, ठीक है? You need to understand here is that कि the partition has to be done using the square box only. That means you have a square shaped box and और उसको आप यहाँ रख देते हो so that your this cat is covered. You will not be using the lines. मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ऐसे करके इनको सेपरेट कर दो. No, this is not the right idea. ठीक है, you have to use the square. तो एक स्क्वायर आपका ये रख दिया यहाँ पर, ठीक है? Then सेकेंड स्क्वायर आप यहाँ रख दोगे. So you can see that आपने दो स्क्वायर यूज करा बट यूर थ्री कैट्स आर सेग्रीगेटेड. एक ये अलग हो गई, एक ये अलग हो गई, और ये ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट हो गई है, राइट? देन यू आर गोइंग टू हैव अनदर बॉक्स हियर, ठीक है? तो आप देख रहे हो कि ये अपने आप सेग्रीगेट हो गए. देन यू कैन पुट दिस स्क्वायर बॉक्स हियर. सो एज यू कैन सी दैट कि आपने यहाँ पर सिर्फ चार ही बॉक्स का यूज करा है और ऑटोमेटिकली all the cats have been separated. ठीक है? So let me redraw this diagram so that you will be able to understand it better. तो यहाँ पर आपने यहाँ से start किया. The very first square you put in, then the second square, then this is the third square, and this is going to be the fourth square. So you see, if you feed 4 as your answer in the input, so you will be getting full marks. But it has also confirmed another आंसर. तो फोर भी इसका करेक्ट आंसर है एज पर द आंसर की. देर इज अनदर वे ऑफ देर इज अनदर वे ऑफ मेकिंग दिस डायग्राम. व्हाट इज द सेकेंड वे ऑफ डूइंग मेकिंग दिस डायग्राम, माय डियर पीपल? लेट मी रीड्रॉ इट. तो यानी कि आप यहाँ पर ऐसा सोच सकते हो कि लेट अस हैव आई हैव वन स्क्वायर बॉक्स which I am keeping in this way. This way I'm trying to draw it. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि this is how you have segregated these four cats. Now you can have another square which you can use to segregate another set of cat. बहुत यूनिफॉर्मली मैंने इस डायग्राम को नहीं बनाया. यू कैन सी ये आपका ना यहाँ पर टच हो रहा होगा इसके साथ. तो आप देख सकते हैं कि ये अनदर वे ऑफ थिंकिंग है कि जहां पर आप दो ही स्क्वायर की मदद से यू कैन सेग्रीगेट all the cats. I hope this idea is clear. So those who are saying, for example, Yash, seven colors, you are saying four box. Yes, four is also correct answer. One of the correct answers. UCEED has marked four also as the correct answer. They have considered four to be the correct one, but two is another way of confirming that. ठीक है, तो दो आंसर यहाँ पर इसके मार्क किए गए हैं इन द आंसर की. So I hope this idea must be clear to you. You can use the four square or the two square. ठीक है, चलिए. Now, this is a very easy question. Many students are going to like this question. This must be one of their favorite questions. So you have to find out how many differences are there in the two images shown below. Okay, so this is the question that everyone must attempt. I can see there are 7 people in the chat box. So you should be attempting all these questions. You should must attempt all the differences कि आपको बताने होंगे कितने हैं. So I'm waiting for your responses in the chat box. ठीक है, यश, प्रत्युष, Dean, seven colors. I'm waiting for your response. Komal, how many differences are there in this figure? ठीक है? So I will be telling you the answer as well. But prior to I tell you, you let me know how many differences are there. I'm eagerly waiting for your response. कि कितने हैं? ठीक है? तब तक सभी लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि you can go in the description box for the study material. You must subscribe to this channel so that आपकी जो भी आर्किटेक्चर और यूसी या एनआईडी निफ्ट जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, you will be getting the complete information related to in the study material section in the upcoming videos that we are going to come with for you. ठीक है? So I hope
आप सभी लोगों ने डिफरेंसेस निकालना स्टार्ट कर दिए होंगे, डिफरेंस निकाले भी होंगे। ठीक है, सो वी हैव 8 पार्टिसिपेंट्स एज ऑफ नाउ, सो यू कैन काउंट देम एंड डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि कितने आपके डिफरेंसेस दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मस्ट डू क्वेश्चन है सभी लोगों के लिए। चलिए, सो लेट अस काउंट इट टुगेदर माय डियर पीपल। आई होप एवरीवन मस्ट हैव डन दिस। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कुछ ऑब्वियस से डिस्टेंसेस से। सबसे पहले आप लोगों को ये मूंछ दिखाई दी होगी जो दोनों में अलग है, दिस इज द वेरी फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, और क्या देख पा रहे होंगे आप, इसे देख पा रहे होंगे, दिस इज द सेकंड डिफरेंस। देन दिस इज गोइंग टू द थर्ड डिफरेंस। ये तीन डिफरेंस आई होप सभी लोगों को दिखे होंगे। ठीक है, बहुत इजी टू पिक है ये। और क्या अलग दिख सकता है, दिस इज द फोर्थ डिफरेंस दैट यू कैन सी हियर। देन कैन आई हैव अनदर, सो ये यहाँ पर आपके फोर्थ डिफरेंस रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन दिस इज गोइंग टू बी द फिफ्थ वन। देन दिस इज गोइंग टू बी द सिक्स्थ वन। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं, देन आई एम गोइंग टू हैव, दिस इज द सेवंथ वन। आप देख सकते हैं दोनों में जो, दोनों डब्बों में जो चीजें रखी है वो दोनों का शेप अलग है। ठीक है, इसके अलावा आई एम गोइंग टू हैव दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स, दोनों में लाइनिंग आप देख सकते हैं, दोनों वेसल्स की लाइनिंग्स एक में है एक में नहीं है। देन यू कैन सी द कलर, दिस इज ब्लू इन कलर, दिस इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, आफ्टर दैट कैन आई फाइंड एनी अदर डिफरेंस ऑनलाइन पीपल हु आर विथ अस? तो अमीशा यू आर एबल टू फाइंड 8, डीन यू आर एबल टू फाइंड 7, बट और भी कुछ है क्या? बहुत एक माइन्यूट सा डिफरेंस है जो शायद ही किसी ने देखा हो या बहुत सारे ने देख भी लिया हो, ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, so let us count how many we have found. So this is the first one, this was the second one, this is the third, fourth, this is fifth, sixth, seven, eight, nine, and this is the 10th one. So 10 differences were there. ठीक है, banana rope, yes, 7 colors, you are absolutely right. So banana rope was something someone may have missed it. तो आपके 10 डिफरेंसेस, और दूसरा जो मिस हो जाता है ना वो ये कलर मिस हो जाता है बहुत सारे बच्चों से। सो टोटल ऑफ 10 डिफरेंसेस वर देयर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो आज हम लोगों ने एनईटी सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है ऑफ यूसी 2018 पीपल। ठीक है, थोड़ा सा टाइम अभी हमारे पास है तो हम आगे के भी 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जो, ठीक है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट एनईटी सेक्शन। एनईटी मींस न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप, जहां पर आपको इनपुट फीड करना होता है इन योर आंसर। ठीक है, आपको ऑप्शन यहाँ नहीं मिल रहे होते, तो यहाँ पर भी आप अगर 10 फीड करते हैं इन दिस क्वेश्चन, अगर आप 10 फीड करते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट योर mark full marks. ठीक है, now let us move to the next question. What it reads, my dear people, so first of all you must read the instruction here. हालांकि ये बहुत पुराना पेपर है तो आपको यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग जैसी चीजें दिखेगी। ठीक है, बट आज की तारीख में जो यूसीट का पेपर होता है, वी आर इन 2022, तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। आई हैव एक्सप्लेन यू द मार्किंग स्कीम एज वेल ऑफ यूसीड व्हेन इट कम्स टू द एमएसक्यू सेक्शन स्पेशली। इसी को लेकर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हाउ मार्क्स आर अलॉटेड इफ आई हैव पार्शियली करेक्ट पार्शियली done some answer, or if I have made one option to be correct and I have done one option to be the incorrect, so will I be getting the full marks or not? So you must visit and watch that video in the video section of our channel where I have explained you the UCEED marking scheme. ठीक है, तो कुछ 15 या 20 दिन पहले के ही हमने एक सेशन किया था, वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आप वो उसको जाके देख सकते हैं। चलिए, नाउ दिस इज मल्टी करेक्ट क्वेश्चन। सो इफ यू करेक्ट ऑल द आंसर्स, अगर आप सारे ऑप्शन को करेक्ट मार्क करते हैं, ओनली देन यू विल बी गेटिंग द +4 मार्क्स, राइट? सो आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्या बोला गया? On the left is a photograph. Which option or options is or are part or parts of that photograph? तो कौन कौन से हमें फोटोग्राफ के पार्ट है, हमको ये उन्हें मार्क करना है। ठीक है, सो लेट अस लुक एट ऑप्शन नंबर ए। तो क्या ये हमको कहीं पर दिखाई दे रहा है कि इस तरीके का फिगर? सो यू कैन सी दैट कि कहीं दिखाई दे रहा है कि सम ऑफ यू में से कि शायद ये यहाँ पर दिख रहा है, बट कंफर्म कर लीजिए एक बार कि क्या वाकई में आपको ये यहाँ पर दिख रहा है या एग्जैक्टली वही है क्या जो आप चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये लीफ
आपको ऐसी दिख रही होगी, बट व्हाट इज दिस पार्ट? क्या ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, सो आई गेस यू कैन सी दैट ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट वन। ठीक है, ए आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप ऊपर कहीं देखते हैं तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर आपको दिखाई देता है ये। ठीक है, बट आपको फिर उस केस में, इन दैट केस यू विल नॉट बी गेटिंग दिस लीफ, right? So that is why you will not be able to find option A in the given image. So A is not the correct answer. So if you are saying that A is correct, it is not. Okay. So Dean, you have said B, C, and D. So let us say C की क्या तीनों सही होंगे? Now if I see option number B, so this is something you are getting. तो ये कहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है? You can see this here. ठीक है, this is option number B. Yes, it is absolutely correct. Then look at this. So वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, this is option number C. And if you look at this, so यही आपका है, this is option number D. So yes, B, C, and D is absolutely correct answer to this question. ठीक है, very good, Dean. चलिए, now this is the question number 22. If the spaces and special characters are ignored in the following text, which country or countries is or are hidden in the text shown below? ठीक है, सो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी कंट्री का नाम आने वाला है इस पूरे टेक्स्ट में। यू हैव टू इग्नोर द स्पेशल कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल फुल स्टॉप, कॉमा, ऑल दैट, एंड ठीक, एंड स्पेसेस यू नीड टू इग्नोर, और आप बताएंगे कौन सी कंट्री का नाम आ रहे हैं। बाय द वे, आप पॉज करिए इस वीडियो को और ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अंटिल देन मैं आपको पिछले क्वेश्चन की भी मार्किंग स्कीम बता देता हूँ। सो यू हैड 3 करेक्ट ऑप्शंस in this question. If you correct all the 3 options, that is option number B, option number C and option D, अगर आप A, B, C, D ऑप्शन में इन तीनों को टिक करते हो, so you will be getting +4 marks here. मान लीजिए आप सिर्फ दो ही ऑप्शन को टिक करते हो, let us say you have ticked C and D, तो in that case you will be getting +2 marks. अगर आप यहाँ पर एक ही ऑप्शन को टिक करते हो तो आपको मिलेंगे +1 marks. ठीक है, बट सपोज इफ यू टिक B and C, or only B or only C, and along with you're also taking any A, and you're taking option number A as well, along with the correct options. No matter how many correct options you're taking, whether you're picking A, B, C, and D. So in that case, you cannot say that key you will be getting some partial marks. No, in that case, since you have picked the wrong option, you will be getting the negative marking for that. ठीक है, तो दैट इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि यहाँ पर आपको इन एनी केस यू शुड नॉट बी एंटरटेनिंग एनी रॉन्ग ऑप्शंस. सो इफ यू आर नॉट कंफर्म विथ एनी ऑप्शन, डू नॉट टिक इट. राइट, करेक्ट ऑप्शन जितने पता है टिक देम सो दैट यू गेट आइदर फुल मार्क्स और पार्शियल मार्क. बट अगर रॉन्ग ऑप्शन आप या किसी ऑप्शन को आप लेकर कंफर्म नहीं है, डू नॉट टिक इट. राइट, चलिए, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. तो आई होप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को पॉज करके देख लिया होगा कि कितने यहाँ पर आपकी कंट्रीज के नेम आ रहे हैं. ठीक है, तो मैं पढ़ना चालू करता हूँ. बस इसके लिए क्रक्स क्या है, इसको किस तरह से आप अटेंड करेंगे, बहुत धीरे धीरे, आपको थोड़ा धीरे पढ़ना है, बहुत धीरे नहीं बोलूंगा. यू विल बी रीडिंग दिस टेक्स्ट स्लोली. ठीक है, एंड लुक एट द ऑप्शन फर्स्ट. द कंट्रीज नेम आर स्टार्टिंग विथ G, I and P. So special focus needs to be provided on those words or those words which has any of these letters, either G, I or P. So I am going to start with here. So I think तो I पर फोकस थोड़ा सा मैं I पर जोर दूंगा. I के बाद I have THINK. So I don't think it is making name of any country. So I think the Earth ecosystem will collapse very soon. ठीक है, natural resources have been exploited for far too long at the cost of the well-being of humankind. ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना होगा. आपके पास काफी बड़ी बड़ी स्पेलिंग आ रही है, तो हो सकता है कि कोई कंट्री का नाम यहाँ पर छुपा हो. सो इफ यू लुक एट क्लोजली यू विल बी फाइंडिंग आउट INDIA. आपको यहाँ पर एक कंट्री का नाम तो मिल गया है. ठीक है, आई एम अफ्रेड, आई डोंट वॉन्ट टू स्टिर अनदर कंट्रोवर्सी. अगेन आपको जो दूसरी कंट्री का नाम मिलेगा वो है IRAN, ईरान. ठीक है, सो दीज आर द टू countries that we have found as of now.
ठीक है। सो फर्स्ट इज इंडिया, सेकंड इज ईरान। ठीक है, तो इन दो को तो टिक कर ही देते हैं। इंडिया इज गोइंग टू द करेक्ट वन, ईरान इज गोइंग टू द करेक्ट वन। ठीक है, बाकी देख लेते हैं कि कहीं पेरू या घाना आ रहा है। दैट मीन्स यू मस्ट लुक एट दोज स्पेलिंग विच हैज जी और पी इन देयर स्पेल। अनदर कंट्रोवर्सी, सो कंट्रोवर्सी में जी और पी कहीं नहीं है, बट आई ardently feel that the time has come for us to take urgent action to save our planet from man-made disasters. Now you must be thinking कि इतनी जल्दी मैंने क्यों पढ़ लिया, आराम से पढ़ना चाहिए था। तो जी और पी को मैं फोकस कर रहा था। आई डेंट गेट जी और पी इन एनी ऑफ द स्पेलिंग्स। ठीक है, सो दैट इज वाई मैं यहाँ पर बोलूंगा कि आई हैव टू वर्ड्स विच इज इंडिया एंड ईरान। ठीक है, सो two correct answers are there in this question. Now again, let me explain you the marking scheme to this question, how you will be getting. So you have two correct answer in this case. So if you tick India and Iran, you are going to get plus 4 marks. If you tick only India, you are going to get plus 1 marks. ठीक है, so this is all about today's session, my dear people. I hope आपको ये सेशन काफी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। आपको समझ में आया होगा कि हाउ यू सीड आस्क के क्वेश्चन। ठीक है, मजेदार भी रहा होगा आप लोगों के लिए। सो यस डीन, इंडिया इज एब्सोल्युटली द वन ऑफ द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, बट ईरान इज ऑल्सो देयर। ठीक है, so this was all about today's session, my dear people, and I hope you must have enjoyed this session. Again, I will request all the participants to click on the subscribe button so that you will be getting the regular updates related to design and architecture exam. Along with this, do not forget to share this video with your friend circle, and do not forget to look at the description box in given below so that you will be able to access the study material of this lecture and of previous videos as well. So this was all about today's session, my dear people. Take care everyone. I'm saying goodbye to you for a while. ठीक है, मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने for with another video with another crucial information and questions. So take care until then. Bye.